नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग अपने लेक्चर 18 की तरफ हैं एंड इसमें हम लोग इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहे हैं। चलिए आप आज का लेक्चर अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज़ RBIH। तो जानते हैं कि RBIH क्या है और बेसिकली इसके पीछे, इसको बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो समझते हैं इसके बारे में। RBI ने रिसेंटली एक RBIH बॉडी को एस्टैब्लिशमेंट किया है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कुछ 100 करोड़ रुपीस के आसपास का है, जो इनकरेज करेगा एंड नर्चर द फाइनेंशियल इनोवेशन इन अ सस्टेनेबल मैनर थ्रू इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इनिशियल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 100 करोड़ रुपीस का है। ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग देखें RBIH के एस्टैब्लिश करने के पीछे का, तो वो है टू क्रिएट अ इकोसिस्टम दैट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज and products for the low income population in the country. This is a hub which would bring convergence among various stakeholders जैसे BFSI sector, startup ecosystem, regulators and academia in the financial innovation space. इसको बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू ब्रिंग अ वर्ल्ड क्लास इनोवेशन टू द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, coupled with underlying theme of financial inclusion. सो मेन ऑब्जेक्टिव इज़ द फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके तहत RBI ने RBIH को फॉर्म किया है अंडर द इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 100 करोड़। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। क्या होता है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है लास्ट ईयर भी। इट इज़ अ कैपिटल विच इज़ केप्ट बाय अ बैंक टू मीट द बिजनेस साइकिल रिलेटेड रिस्क. It is aimed to protect the banking sector against the losses from changes in the economic condition. Banks भी जब difficulties face करते हैं in times of recession, when the loan amount doesn't return, so in that point of time they can use their counter-cyclic capital buffer. To meet such situations, banks should have own additional capital, and this is important theme of the Basel III norms. Following the Basel III norms, central banks specify certain capital adequacy norms for banks in a country. The capital which is being kept by the bank or the counter-cyclic capital buffer is a part of such norm and is calculated as a fixed percentage of bank's risk-weighted loan book. So do remember about this. नेक्स्ट हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट फंड आता है जिसको कहते हैं स्वमह इन्वेस्टमेंट फंड 1. It is India's largest social impact fund which is aiming to provide a priority debt financing for the completion of stressed brownfield and RERA registered residential projects that fall in the affordable mid-income housing category. This fund is going to be sponsored by the Ministry of Finance and is managed by SBI Cap Ventures, a state bank group company. स्वाम्या स्कीम के बारे में अगर आप देखें तो इन 2019 सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था स्पेशल विंडो फॉर फंडिंग स्टॉल्ड अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इसको स्वाम्या स्कीम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है स्कीम का इज़ टू प्रोवाइड द प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स falling under the affordable and middle income housing categories. So this is also an important investment fund scheme, so do remember about this. Next, Reserve Bank Innovation Bank, जिसके बारे में अभी आपने रिसेंटली भी पढ़ा RBI है, उसी के बारे में ये दोबारा से टॉपिक डिटेल में है। Then we have an NFT bubble. So what is NFT bubble? So unlike a fungible asset that can be readily interchanged जैसे money, non-fungible tokens जो होते हैं या जिनको हम NFT कहते हैं, they are the unique digital asset that cannot be interchanged. So NFT can be really anything digital like drawing or music, but a lot of the current excitement is around using the technology to sell the digital art. NFT can help the artwork in getting tokenized, thus creating a digital certificate of ownership that can be bought as well as sold. NFT may also contain smart contracts that give the artist, for example, a cut of any future sale of the token. So NFT is quite important. Last year भी NFT के ऊपर question आ चुका है, so definitely remember NFT is quite important for your examination. NFT जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एंड फॉर द अनइनिशिएटेड ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वेयर ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. इट इज़ लाइक योर बैंक पासबुक एक्सेप्ट ऑल योर ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी सीन बाय एनीवन and cannot be changed or modified once recorded. NFT does not prevent people from copying the digital art, and parallelly most of the NFTs are the part of the Ethereum blockchain. However, other blockchains can have their own version of NFTs. So NFT cryptocurrencies are different कैसे हैं? NFTs and cryptocurrencies are very different in a way.
दोनों ही NFT और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, बट डिफरेंस यहाँ पे हमें कुछ कुछ देखने को मिलता है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो करेंसी है बट फंजेबल है, जिसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करा जा सकता है। लेकिन अगर हम NFT की बात करते हैं, वो नॉन फंजिबल है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ वन NFT इज़ नॉट इक्वल टू अनदर, सो एवरी आर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अनदर एंड मेकिंग इट अ नॉन फंजिबल एंड अ यूनिक बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर। सो इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल. Domestic apparel and textile industry in India contributes approximately 2% to the country's GDP and 7% of the industry output. The share of textile, apparel and handicraft in India's total export is approximately 11.4% in 2020 to 2021, or India holds 4% share of the global trade in textiles and apparel. So what is the contribution of India in respect to the textile sector? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। साथ ही साथ इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन एंड जूट इन द वर्ल्ड. इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड एंड 95% ऑफ द वर्ल्ड्स हैंड वूवन फैब्रिक कम्स फ्रॉम इंडिया. जो इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट है वो एस्टिमेट करता है कुछ $16 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 6% ऑफ द ग्लोबल मार्केट. Textiles and apparel industry is the largest employer in the country, providing direct employment to 45 million people and 100 million people in elite industries. Next we have gig economy. So according to the World Economic Forum, gig economy is defined by its focus on workforce participation and income generation via gigs. So it is a single project or a task for which a worker is hired. So gig workers को हम broadly classify करते हैं platform और non-platform workers में. Platform workers वो हैं जो work on online software apps or digital platforms such as Ola, Swiggy and Zomato, were the aggregator platforms. And non-platform based workers are the ones who are the casual wage and own account workers in conventional sectors which are engaged in part-time or a full-time roles. What is a bioeconomy? So this is also an important thing. So United Nations Food and Agriculture Organization define करता है bioeconomy को as a production, use and conservation of biological resources, included related knowledge, science and technology and innovation to provide information, products, process and services to all the economic sectors with the aim of moving towards the sustainable economy. That is what is called as a bioeconomy. So this is all we have in today's lecture, and आने वाले lectures के अंदर हम लोग और ऐसे topics के साथ आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हमें कमेंट सेक्शन पे भी बताइएगा आप कि आप हमारे से और कौन सी वीडियोस चाहते हैं कि हम जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस को बनाएं. लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन. रेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट अ लाइक बटन. Till then, take care everyone. Thank you so much. Keep studying. You can join us for further courses like our foundation course for 2023-2024 for UPSC or state PCs. You can join us for the test series for prelims cum mains for UPSC as well as state PCs. And even you can join us for subject specific classes which are also available at Radiance IS. For any detail, you can contact us on the given numbers in the description box. Thank you.